Hello everyone, welcome back to my channel. So today I will create the eye look using the red eyeshadow and the shimmer shadow. In order to create this look, firstly you have to take the red eyeshadow and apply it over all your lid. After applying red eyeshadow, take in brown shade. इस ब्राउन शेड को आप आउटर कॉर्नर से इनर कॉर्नर की तरफ ड्रैग कीजिए एंड इसे अच्छे से स्प्रेड कीजिए. देन टेक एनी लाइट शिमर शेड. मैं यहाँ पर क्रीम शेड अप्लाई कर रही हूँ विद यूजिंग योर फिंगर और यू कैन यूज एनी टूल इफ़ यू हैव एनी. देन आई एम यूजिंग द लैक्मे अल्टीमेट ग्लैम eyeliner. So here I am applying the eyeliner with the help of this tiny brush and मैं यहाँ पर ये dot कर रही हूँ so that follow the dot you can make the easy line and create the unique eye look. After this look, I am creating more drama by using the kajal from the Rene Cosmetics. To create the more drama, here I am using the water activated white liner. Tell me one more of your lies. Please don't say goodbye. So now I will create the same eye look to the other eye. Here it is done. Here I am applying the false lashes to make this eye look more beautiful. Applying the highlighter on your eyebrow bone. Then I am applying the Europe Girl
mascara on my lower lash. looking for a sign under the stars. So here the final look.